EECS and this live session is basically for IISc Bangalore, those who have got a call for interview and written test. So first of all, let me this live session is I think voice is not okay, right? Got a call for interview and written test. So first of all, let me I think voice is not audible, so let me first fix this problem. Okay, I think now it might be okay because again the mic is not working well. So many congratulations to everyone those who have got a call for interview क्योंकि I think इस साल का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जा रहा है compared if you compare from the last year, because this time many students have scored kind of 50-60 marks, so you don't have to worry about if you haven't got a call. Now it is okay. एक बार confirm करना. Kind of 50-60 marks, so you don't have to worry about if you haven't got a call. I think now it is okay, right? Kind of 50-60 marks. Now I think it is okay. Please confirm once if you guys are live and एक बार आप लोग कंफर्म कर देना whether my voice is okay or not, otherwise I'll fix again. I think it is fine now. I have let me fix again. So my main agenda of the session is everything is okay. Desktop. So So those who have got a call from IISc Bangalore, I think they did not release the cutoff. Let me check that whether they have released or not. See cutoff. So every time what they used to do whenever they release the interview calls, it has been I think released for 2026. So I'm gonna show you everything, right? Cutoff report is already released, so I'm gonna share the screen. Okay, please watch. Okay, I'm just going to share the screen, guys, so that you guys can have a look. Fine. What was the cutoff for IISc Bangalore this year? Okay, I mean because so I will take question as well, but let us see first of all those who haven't got a call, what was the reason, what was the cutoff? Because what they do usually is when they release the interview call, okay, then only they just share the cutoff, right? I'm just going to share the screen and let us have a look what was the cutoff this year. At least for the interview call, and final admission gate score, what is going to be, they will be releasing once the admission offer will be released, okay, after the interview process. And this is for MTech 2-year program, okay, remember this. So let me share the screen first. So I'm just going to share the screen and let us have a look, because I haven't also seen this. So I think MTech, MDes, this is I think, fine. So I'm just going to share the screen, guys, just a moment. Yes, I think this is fine. So I think everyone is able to see the screen, so that so I'm just going to walk you through this. I think everything's okay. Fine. That's okay. So this is the cutoff report. So let us have a look here. Artificial intelligence, right? So those who have applied for artificial intelligence, देखो EC का cutoff तो I think same है. EC and data science cutoff is 820 and CS cutoff is 880, right? For getting a call. ठीक है. So but
you know, if they are going to call for EC, if somebody has a score nearly 600, you know, kind of, so, but still you will not be selected in the end because your exam will be there. That's it. Okay. You're not going to, you know, get final offer. Okay. This usually happens always, right? Last year also I went for, you know, AI, okay, written exam. And that was just an experience. Okay. They usually take CS and data science students. Okay. Remember this. So if your score is 650 or 600, and if you have got a call from, you know, AI, I think you don't need to go also, right? Instead of spending your money and all, right, needless to go there and just, you know, I mean, prepare for other opportunities, right? That is what my suggestion is gonna be. And so you can see AI cutoff, okay, and okay, for CDS, I think for EC 700 and CS 790. So for CDS, this time they have decreased some sort of, okay. For AI, always it is very high. Okay. I think everyone is able to see this, the cutoff, okay. Someone is asking, sir, I have done diploma in ECE, CS 790. So for CDS, somebody has done 7, okay, in EC, then I had done B in EC. I got a call from CFTI in IISc. So yeah, you are eligible. Okay, if you are from, I think, NIT or some good college, right? So you might belong from CFTI, and you can just check your CPI. Okay. Yes. So let me move ahead and talk about other things. Okay. Yeah, so for electrical engineering, okay, so 600 is the cutoff. I think many of you might have applied. Also, try to look at your score based on your category, right? So the first column talks about, you know, for general CAT and OBC, then EWS, SC, okay, and these things, right? So, fine. And for EPD, oh, for electronic system engineering, 775 is the cutoff, okay, and for E 950 and for instrumentation 950. So I'm very sorry for those who have applied from electrical and instrumentation, because आपको पहले से मैंने बताया है कि like if you are going for applying for if you're from EE and IISc में 2 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा. एंड EC के लिए कम है, but still it is super high, but the category people might have got a call, okay. So आप देख सकते हो EC के लिए. And instrumentation, I think many of you have got a call from my group as well, ठीक है. तो आप instrumentation system में दे. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ थोड़ा सा इस बार ज्यादा है. EC के लिए 800 है, IN and इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 950 है, okay. And for mobility engineering, I think okay, quantum computing, quantum technology का भी कट ऑफ आप देख सकते हो, 600 यहाँ है. एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो मोस्टली those who are from EC and electrical instrumentation, they want VLSI, right? But at IISc, since they are conducting, you know, this admission process so quickly, so they certainly want topper, right? ठीक है. And this is for 2-year program. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी EC का 700 है एंड इलेक्ट्रिकल का 600. बट यू कैन सी योर कैटेगरी वाइज स्कोर, सो इट लुक्स, you know, kind of normal only. But for EWS and for OBC, you know, scores are same, you know, but for SC, ST and all, yeah, it is slightly lower, okay. So sir, IIT दिल्ली में VLSI का कैट में किस में इंटरव्यू नहीं होगा? देखो, इंटरव्यू मोस्टली 2-year प्रोग्राम में नहीं होता है ऐसी IIT दिल्ली में, बट RA में 3-year वाले में रहेगा, ठीक है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फाइन. सो आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दिस कट ऑफ रिपोर्ट, ओके. सो इस साल का कट ऑफ कुछ ज्यादा है गाइस, ओके. आई थिंक यू कैन गेट कन्विंस्ड नाउ फ्रॉम IISc बैंगलोर. यूजुअली इट विल नॉट हैपन एट IITs, ठीक है. तो आप लोगों को ट्राई करना है अपॉर्चुनिटी. दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 2-year प्रोग्राम एंड दे वर काइंड ऑफ स्टक कि नहीं भाई, मुझे तो VLSI में ही जाना है, आई हैव टू गो फॉर AI एंड ऑल, माय स्कोर इज दिस, बट स्टिल आई विल अप्लाई फॉर दैट. एंड व्हाइल चूजिंग द प्रेफरेंसेस, आई वाज आस्किंग कि यार, if you're applying, so this is gonna be your own risk, right?
क्योंकि होता क्या है कि यार इफ यू आर टारगेटिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल राइट, सर्टेनली द स्कोर इज गोना बी प्रेटी हाई एंड देयर इज अ वीमेन कोटा, सो मेनी गर्ल्स हैव गॉट द कॉल फ्रॉम द वीमेन कोटा बिकॉज वीमेन कोटा का स्कोर थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। So women quota, OBC, SC, ST, the scores are, kind of on a lower side, but for general category, always it will be higher. Okay, so someone is saying cutoff are really high considering cheating वजह से score भी बहुत कम हो गए थे। हाँ, yeah, it is true, right? तो मतलब जो भी cheating and all हुआ है तो because of that many people scored well, right? तो जब kind of calculation होता है, so certainly जिनका कम मार्क्स है उनका तो स्कोर बहुत ही बैड हो जाता है, ठीक है। सो दिस टाइम दोज हु हैव नॉट परफॉर्म वेल, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू गाइस कैन गिव गेट। और अगर आप कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करोगे, इफ यू हैव अ काइंड ऑफ एटीट्यूड नॉट टू गिव अप थिंग्स, सो आई बिलीव यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एंड काइंड ऑफ आई वाज नॉट गेटिंग अ स्टेबल अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर, राइट। मैंने भी बहुत जगह काम किया है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट सम मार्क्स, मोर देन 50 मार्क्स एंड देन आई ज्वाइंड, राइट। सो मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप 22, 23, 24, 25 ईयर के हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, योर लाइफ इज देयर, okay, you can do better, okay। I all every day talk with the students and they say that कि सर बहुत ज्यादा टेंशन है, but I always recommend कि if your age is kind of 21, 22, 23, 24, you're not late guys, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। मतलब जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बट डोंट फील लाइक यार, एंड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद योर टीचर्स जिनके साथ भी आपका कांटेक्ट है, क्योंकि सबके लाइफ में थोड़ा सा लोज एंड हाईज आते हैं लाइफ में। जैसे मेरे लाइफ में लास्ट ईयर आया था, then I was not able to teach live as well. I started live sessions but I was not able to teach live, and after the result okay, things became really bothering me, right। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है यार कि नहीं, I should have taught, but अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है, आई हैड अ प्रॉब्लम सो आई वाज नॉट एबल टू टीच, बट आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई हाउ टू जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना है एंड ट्राई टू गेट मोर देन 50 मार्क्स, है ना। और गेटिंग मोर देन 50 मार्क्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट या इट नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑनेस्टी, है ना। आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। लाइक यू माइट हैव सीन मी, आई डोंट कम frequent live, I don't come and don't conduct any session on YouTube as well because we need to be in discipline if we want to learn something, ठीक है। So IISc में जिनका भी कॉल आया है, so what they have to do, sir, how is IISc instrumentation for place and perspective? I am getting an interview call, fine। So since you have got, so देखो यार इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो जॉब तो IISc से लग ही जाता है, ठीक है। If you compare the CTC, okay, अब इंस्ट्रूमेंटेशन में रहोगे तो यू कैन आल्सो काइंड ऑफ प्रिपेयर योर प्रोफाइल फॉर VLSI एंड ऑल, बट इफ यू कंपेयर द CTC, certainly CTC is gonna be different, okay, from the VLSI and ESE and other semiconductor related specializations, right? So but at least give a chance, go there, I mean go there and give your best, okay, since you have got a call, so it's good, right? So while applying for IISc Bangalore or any IITs, you should understand that कि अगर आपका थोड़ा सा स्कोर कम है and if you are going for 2-year program, so don't be rigid only कि यार मुझे VLSI चाहिए, मुझे CSE चाहिए, मेरा स्कोर ये है तब भी मुझे CS चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, राइट, और अगर आप रिजिड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो इनफैक्ट अ मेंटर आल्सो फेल टू काइंड ऑफ गाइड at that point of time, right? But still since there are many choices that you can fill, okay, during the application process, okay, IIT Delhi में अलग अलग है, मतलब you have to fill applications differently, I mean separately, department wise जितने भी choices डालना है, but in all other IITs you can you can fill
द चॉइसेस, देयर विल बी 5 चॉइसेस, 3 चॉइसेस काइंड ऑफ। सो कहीं ना कहीं फिर कॉल आ ही जाएगा, ऐसा होता है। बट वीएलएसआई डिमांड्स मोर स्कोर एंड आईएससी का तो आपको पता है कि सबसे पहले आईएस पीपल गो फॉर आईएससी बैंगलोर बिकॉज यू नो वहां पर लेस नंबर ऑफ अंडर ग्रेड रहते हैं, मास्टर्स आर मोर, राइट? सो easy to kind of learn, I mean, and kind of cope up with the placement, right? And kind of get placed, grab a good placement opportunity and internship. So whatever IITs are there now, please be careful, apply for that, and don't be stick to one particular specialization if your score is low. ठीक है, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटीज और आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमटेक करेंगे, अगर वो स्पेशलाइजेशन वीएलएसआई है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, यू नो, यू कैन से दैट कम्युनिकेशन सिस्टम है, मशीन लर्निंग एंड एआई, डेटा साइंस, आपको जॉब पक्का मिलेगा। हो सकता है कैंपस से ना मिले, बट अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री रहेगी तो यू कैन, इफ योर सीपीआई इज गुड एंड एवरीथिंग, सो यू कैन रीच आउट टू एनीवन ऑन लिंक्डइन और नियर बाय योर कलीग, आई मीन जिनको आप जानते हो, राइट? सो आपको जॉब मिलना फिक्स है, बट आपको स्टिक नहीं रहना यार कि मुझे बस यही, अगर आप स्टिक रहना चाहते हो, so my suggestion would be again write the gate with more discipline, है ना? And hopefully next year IIT Madras is going to conduct the gate 2027, so things will be all right. Okay, there will not be any sort of cheating or जो भी आपको लगता है कि cheating हो रही है and all, right? ठीक है। So yeah, so the question is will written test and interview both going to conduct for CDS department? Yes, वहां पर I think वहां रिटर्न, देखो आपका जो CDS और AI का रिटर्न आई थिंक वो मर्ज कर देते हैं, लास्ट ईयर भी किया था, तो फिर इंटरव्यू भी होगा, बट AI में इंटरव्यू नहीं है, देयर विल बी ओनली रिटर्न एग्जाम। But I think those who will perform better in AI written exam, so they might get considered for that also, right? Depending upon the crowd they do, बट मोस्टली योर इंटरव्यू इज गोना बी हैपनिंग। सो सब कुछ जो मेंशन है आपके प्रोसीजर में कि ये होगा तो वही होगा, राइट? नीडलेस टू वरी। सो ट्राई टू प्रिपेयर वेल फॉर एआई रिटन एग्जाम, क्योंकि काफी हाई स्कोर गया है, दैट आई कैन सी। ठीक है, या any other question, please tell me, and all the best, you know, and those who are looking for mock interviews, like let's say someone is from EC or electrical engineering or instrumentation, if they have got a call varying from any category, right? Depending upon your category, I'm gonna guide you for mock interviews, so you guys can message me on WhatsApp, right? If you're not in my WhatsApp group or EECS group में अगर आप नहीं हो तो आप मुझे reach out कर सकते हैं, and then I'm gonna guide। ठीक है, अभी ज्यादा एनर्जी नहीं है, I will be winding up the session here. I suddenly came across the cutoff score, so wanted to just show you कि ये cutoff है, आप लोग देख सकते हैं। In fact, I will be sharing this PDF in the group. You guys can find my number anywhere and message me directly. Dheeraj sir, this is the call letter that I have got from IISc Bangalore, and please guide me. So I'm gonna guide you, right? And जितने भी EECS के students हैं, if they are watching me as well, so if you haven't performed better since I haven't conducted live session last year, yeah, certainly. So I'm gonna take care of everything that you will say. But my request is gonna be, I mean, everything is gonna be all right. Okay. Sir, on website of CDS, it's written no, okay, and no oral interview will be conducted. अच्छा, तो देखो यार, last year तो I think conduct हुआ था, but yeah, again, every year it varies, right? लास्ट ईयर क्या था कि सीडीएस में हुआ था, बट एवरी ईयर इज इट वेरीज। सो इफ योर स्कोर इज सुपर हाई, इट्स फाइन, गो एंड गिव योर बेस्ट इन द रिटन एग्जाम। ठीक है, क्योंकि रिटन एग्जाम ही इतना टफ रहता है कि मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इफ यू वांट प्लेलिस्ट आई कैन शेयर विथ यू, यू हैव अ टाइम, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर यू हैव टाइम और नॉट, बिकॉज आई थिंक सबका इंटरव्यू 15-16 के अराउंड ही है ना, अप्रैल में रिटन एग्जाम भी है। सो कैन समबडी टेल मी व्हेन योर एग्जाम, आई मीन व्हेन योर रिटन एग्जाम इज गोना बी फॉर एआई? यस,
कब आपका रिटन एग्जाम है और कब इंटरव्यू है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपियर किया था तो आई हैव सीन दैट कि देयर वाज अ लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एंड मल्टी वेरिएबल क्वेश्चंस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के क्वेश्चन थे बहुत सारे, और आई थिंक देयर वाज नियरली 30 क्वेश्चन, और आपको सॉल्व करना है। एक काइंड ऑफ ब्रैकेट रहता है, उसमें आंसर लिखना है बस। दे डोंट चेक योर प्रोसीजर एंड ऑल, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। व्हाट दे वांट इज द फाइनल आंसर, एंड मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ, लेट्स से अगर आपका आंसर आ रहा है क्लोज फॉर्म में तो आप क्लोज फॉर्म वहां लिखेंगे, ऐसा है। ठीक है। So please work hard now because I think you can brush up. And those who have got a call, मतलब they might be intelligent only because आपका रैंक अच्छा है ना। Particularly those who are from CS and data science, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इन MTech ही नहीं आए, IISc Bangalore takes mostly from CS and data science. They don't take from, in fact nowadays, from electrical and electronics people. ठीक है, भले उनको बुला करके वहां भीड़ रहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई दे डू, राइट। दे कॉल 600 स्कोर वाला बंदा भी और वो लेते नहीं है, 700 स्कोर वाले बंदे को भी बुला लेते हैं बट वो लेते नहीं है। ये हिस्ट्री में है ही नहीं। ओके, तो जिनका स्कोर अच्छा 15 को है क्या, ओके 15 को है, तो आई थिंक टुडे इज 4, सो यू हैव 6 + 5, दैट इज टोटल 10 डेज यू कैन कंसीडर, बिकॉज आप ट्रेवल भी करोगे। ठीक है, सो आपके पास 9 डेज हैं, 10 डेज हैं, सो यू जस्ट ब्रश अप, ओके, ऑल द बेसिक्स। और सीएस वाले मोस्टली दे डोंट हैव बैकग्राउंड, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन वेक्टर कैलकुलस, राइट। So mostly questions they ask from vector calculus as well, like multivariable calculus, right? So try to revise multivariable calculus, like how to compute gradient and all, right? How to compute directional derivatives. ये क्वेश्चन पक्का रहेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट डिसेंट्स, ग्रेडियंट कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे मैक्सिमम रेट निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज, राइट। तो मोस्टली वी कंप्यूट ग्रेडियंट एंड ऑल। सो आप लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, और ट्राई टू रिवाइज रैंडम वेरिएबल डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस एंड ऑल, लाइक काइंड ऑफ cumulative distribution function, all those things, PDF, CDFs. Yeah. So all the best again. और EC वाले, EC इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपका EC से कॉल आया है, if you're from ESC, like ESC से कॉल आया, और EC, और microelectronics, please prepare analog circuit, digital circuits, signal and system, mathematics, like how to graph a function. IISc Bangalore का सबसे favorite topic है, favorite question है, how to graph a function, right? So they will give you some function like, let's say, log x by x, right? या sin x by x कैसे plot, या कि you can say x sin x, right? X log x. Okay, so how to plot those functions, you can find the videos on my this EECS as well, if you scroll down, or you can find the playlist as well, so you will be able to learn how to graph a function. Okay, I may look tired today because of some conversation that I did today with some of the students, but fine. Not every day is a good day for me as well, right? But it's fine, it happens. I'll try to kind of do better ahead. Try to do well, and best wishes for IISc Bangalore. And जिनको भी थोड़ा सा confusion हो रहा है, they can always dial. So डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, those who wants to get guidance. So मैंने यहाँ नंबर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो, you just check the description, you will find the WhatsApp number, you can directly reach out to me, right? Yeah. Any other question if you have, please ask, otherwise I will wind up the session here. Yes, guys. If you have any other question, please ask. कैसे प्रिपेयर करना, if you want any sort of material, you can message me, I will share my standard playlist, okay? I'm gonna share my standard playlist as well as some of the playlists you can see on EECS as well for single variable calculus, and linear algebra. If you search linear algebra by 𝐁𝐚𝐭𝐜𝐡 sir, you will find the playlist, and you can prepare well, right?
Yes. I'm not gonna spend much time right now. Later, I will connect back. Okay? Thank you. If you don't have any question, okay? I'll connect back. And please, those who are enrolled at ECS for post-grad guidance, keep in touch. If you want mock interviews, so I can conduct mock interviews next weekend, right? So you have next 7 days to prepare. You just get ready and let me know when you are free, so I can connect on Gmeet and kind of ask questions which are asked at IISc, right? So that you guys can have a kind of practice before you go for actual interviews, right? Okay, thank you.